Now the next use of potentiometer to determine the internal resistance of the cell. You know already across the potentiometer wire, the potential will be get dropped uniformly and it does not draw the current from any circuit. So you know already the difference between the EMF and the potential difference. EMF of the cell means the energy supplied by the cell to circulate the charge through the circuit, that is called as EMF. And suppose this is the cell. If there is the flow of current through this cell, then the potential difference between the terminals of the cell is called as terminal potential difference. Okay. तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क इतना ही है कि अगर सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस समय उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको EMF बोला जाता है, और अगर करंट फ्लो होता है तो उसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो हियर टू डिटरमाइन द internal resistance of the cell by using that potentiometer. Again, the required circuit diagram is as shown in the figure. Along the potentiometer wire AB, a cell E1, a cell of EMF E1, key K and rheostat RH is connected in series as shown in the figure. The cell which internal resistance is to be determined is its positive terminal is connected at the higher potential of that wire AB. Suppose E be the EMF of that cell and R be the internal resistance of this cell. R be the internal resistance of the cell. Which negative terminal is connected to the galvanometer and another end of the galvanometer is connected to the jockey. Then across this cell a key K, K1 suppose, and resistance box RB is connected as shown in the figure. This is the required circuit diagram to determine the internal resistance of the cell. देखो यहाँ पे दो सेल लगे हैं, एक ये वाला हो गया और ये दूसरा ड्राइवर सेल. यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है अपने कौन से सेल का निकालना है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. तो फर्स्ट वी विल क्लोज द की के. दिस की के विल बी गेट क्लोज्ड, की के विल बी गेट क्लोज्ड एंड K1 की विल बी केप्ट ओपन. ठीक है, ये जो की के इसको क्लोज कर रहे हैं अपन और की K1 को क्या रख रहे हैं, ओपन. एज दिस की K1 इज ओपन, ओनली द सेल इज इन द सर्किट इन दिस पार्ट ऑफ द सर्किट. ओनली सेल क्या रहेगा, सर्किट में रहेगा. दिस रेजिस्टेंस बॉक्स इज नॉट इन द सर्किट बिकॉज दिस की K1 विल बी केप्ट ओपन. आफ्टर दैट दिस जॉकी विल बी टच्ड एट various point on the wire AB and the point is selected at which the galvanometer shows null deflection and suppose that point is P and the length of the wire in between the point A and P is suppose L1. So EMF of the cell equal to KL1. K क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो इसके पहले के लेक्चर में तुमको ऑलरेडी मालूम है. पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो L1 इतने लेंथ पे नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब एट दैट टाइम देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल एंड करंट फ्लो नहीं हो रहा है. इसका मतलब वो वैल्यू का वो बैलेंसिंग लिंक किसके लिए होगी, फॉर द EMF ऑफ द सेल. मींस दिस इज द बैलेंसिंग लिंक L1 which will be get obtained for the EMF of that cell. After that this key K is closed and K1 also get closed. पहले पार्ट में क्या किए थे अपन ने, इस K1 को ओपन रखे थे, K को क्लोज किया. अभी क्या करना है, K और K1 दोनों को क्लोज करना है. एज दिस की K1 विल बी गेट क्लोज्ड एंड अ सुटेबल रेजिस्टेंस R, a suitable resistance R is selected from the resistance box. ये जो resistance box है यहाँ से एक suitable resistance select करना है. Due to that, what will happen there? As this key K1 will be get closed, there is the flow of current in this upper part of the circuit due to this cell. Okay, and that current is suppose I. Now the jockey is touched at various point on the wire AB and the point is selected at which the galvanometer shows null deflection. That point is suppose P dash and the length of the wire in between the point A and P dash is suppose L2. So here इसके पहले क्या हो रहा था, पहले पार्ट में जब आप जॉकी को इस पॉइंट P पर टच किए थे, गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो किया था. उस समय रेजिस्टेंस बॉक्स में का रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं था.
मीन्स उस समय इस सेल का ईएमएफ और इस पॉइंट पी पर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की वैल्यू सेम हो रही थी. देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल और गैल्वेनोमीटर, देयरफॉर गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन. ओके, मीन्स वो जो रीडिंग थी यहां पर अपने को किसके लिए मिली थी? फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल. लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? एज दिस की के विल बी गेट क्लोज, देयर इज कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट अपर पार्ट ऑफ द सर्किट. मीन्स हियर एट दिस पॉइंट P dash, at this length L2, the null point which will be get obtained, that is for the potential difference of the cell. किसके लिए रहेगा वो? potential difference of the cell. क्योंकि क्या बोला मैंने? करंट फ्लो होता है तो क्या बोलते हैं उसको अपन? पोटेंशियल डिफरेंस. और सेल में से अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो उसके टर्मिनल से का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या बोलते हैं अपन? ईएमएफ. सो हियर that V equal to KL2, equation number 2, from equation 1 and 2 or equation 1 divided by equation 2 we'll get here E by V is equal to KL1 by KL2. K get cancelled, means you will get here E by V is equal to L1 by L2. Equation number 3. Now apply the Kirchhoff's voltage law on this upper part of the circuit, that is PQRS suppose. ठीक है, क्या लिया अपन ने? एक लूप PQRS. On this loop, if the Kirchhoff's voltage law will be applied, then you know already sign convention. If we move from the positive to negative terminal of the cell in the direction of trace loop, then the EMF of the cell becomes negative, means minus E. If the direction of current and trace loop is same, then the product of current and resistance will be taken negative, otherwise positive. यहाँ पर ये जो करंट I है, we are moving from P to Q, but this current I is moving from Q to P, means अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव. मीन्स हियर प्लस IR, then QR कुछ भी नहीं है, R to S. We are moving from R to S, current I is moving from S to R, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. फिर से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स में अपन ने रेजिस्टेंस सिलेक्ट किए थे R, उसका भी प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, दैट इज प्लस IR इज इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस यू विल गेट E इक्वल टू I इन ब्रैकेट R प्लस R. ओके, बट पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होगा? IR. मीन्स ये जो रेजिस्टेंस लगा है, इसका रेजिस्टेंस कितना था अपना? R, उसके वजह से करंट कितना जा रहा है? I. मीन्स इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? IR. सो देयरफॉर E by V is equal to I R plus R upon IR. I get cancelled. But E by V equal to अभी निकाले थे अपन ने क्या था? L1 by L2 is equal to R by R. डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय R by R. दिस R by R क्या हो गया? 1. सो देयरफॉर स्मॉल r upon R is equal to L1 by L2 minus 1. So therefore small r equal to L1 r into L1 by L2 minus 1, that is r equal to L1 minus L2 upon L2, and by using this formula we can determine the internal resistance of the cell. Okay, this L1 is the balancing length for the EMF of the cell, L2 is the balancing length for potential difference of the cell. So therefore R is the resistance which will be get selected from that resistance box, and by using that relation we can determine the internal resistance of the cell. So in this way, these are the three uses of that potentiometer to compare or to determine the EMF of the cell, जिसमें दो मेथड देखे थे अपन ने, एक कौन थी? सिंगल सेल मेथड, दूसरा क्या था? सम एंड डिफरेंस मेथड. तीसरा यूज क्या हो गया अपने यहाँ पर? टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ओके, सो इन दिस वे we can determine the internal resistance of the cell by using that potentiometer. Okay, thank you.